Well, hello and hello and a very good afternoon to all of you, dear elective English students and my viewers on YouTube. I welcome all of you to this session, and as you are all aware, that I'm your host, an English teacher from AMU called Akhlaq Ahmed, and before I start, I request all of you to subscribe the channel, like and share, so that um, we can continue putting up uh, various informative videos for you. So this session is based on Shakespeare's sonnet from Elective English Core, "Let Me Not to the Marriage of True Minds." Um in this session, I'll dictate you the theme of the poem and give you some of the difficult words and you know introduce the poem to you. I'll also talk about uh, the the you know uh, mm, uh, sonnet, the form of sonnet. That's uh, a very popular kind of English poetry. So we will discuss all that in a step by step manner. First, you please note down the theme. And remember, elective English students, uh, soon after recording this, I'll upload it and I'll request you to go through it today itself, note the theme down, and make up your mind because tomorrow uh, we would have our extra class, hopefully from 1 to 2, in which I'll discuss the text with you. So, for the time being, as I said, we'll focus on the theme, the difficult words, and the background to the poem. Okay, so the sonnet begins with the line, "Let me not to the marriage of true minds." Now, please note down the theme. 3 o'clock p.m. Uh, It is 3 o'clock p.m. yes, here we go. The poem deals with the theme of love, and the poet suggests that genuine love is eternal, comma, unchanging, and consistent. Full stop. True lovers are neither disloyal nor opportunistic. 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 Full stop. True love is compared to, अब ये चार लफ्ज इन्वर्टेड कॉमा में होंगे. Start inverted comma and then write an, ever, EVR, fixed, mark,
mark, M-A-R-K, commas closed, which remains intact despite facing various tempests, T-E-M-P-E-S-T-S, tempest, full stop. This comparison suggests the power, P-O-W-E-R, power, and permanence of love. Full stop. In other words, comma, genuine love conquers the worst of the worst. That is W-O-R-S-T, worst of the worst. Full stop. Like the North Star, comma, which shows direction to every wandering ship and boat, comma, the genuine love also becomes a source of guidance for the lovers. Full stop. Next paragraph. True love always overcomes the defects of time and space, full stop. In this respect, the poet suggests that, or rather, the poet points out that, suggests मत लिखिए, points out लिखिए. The poet points out that time can only destroy physical charm and beauty, whereas
genuine love continues to exist. अब ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिए, उसमें लिखिए even to the edge of doom, doom, full stop, commas closed. So this is the theme of the poem. Now we will come to some of the difficult words. You see, just a second. Yes, you can note down some of the difficult words. You see, one word that occurs in the poem is compass. Compass. In this context, it means limit or range. Limit or range. The next word is sickle. Sickle. Note down the meaning. A short-handled farming tool with a semicircular blade with a semicircular blade used for cutting grain or trimming. Or trimming. In simple words, it's a reaping hook. Reaping hook. इसको हमारे ज़बान में हसिया बोलते हैं, या कुछ लोग इसको दराती भी कहते हैं, जिससे कि आमतौर पे घास वास भी काटी जाती है. So this is the word. Now one more word, remove. Remove in this context means destroy. And remover is used in the sense of destroyer. And another word, bend. Bend in this context means to force someone to surrender. To force someone
to surrender. For example, they want me, they want to bend me to their will. They want to bend me to their, THEIR, their will. माने कि वो मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं. So, these are some of the difficult words. You see, the rest of the words, if you find them difficult at all, will come up when we take up the poem. Let's now have a kind of an introduction to the poem, so that when we meet tomorrow at 1 p.m., we can straight away take the text, analyze it, and understand it. Okay, so first, let's read about Shakespeare. It's a sonnet by Shakespeare. So William Shakespeare, his date are 1564 and 1616, was one of the greatest poets and dramatists of the English language. Born at Stratford-upon-Avon, it's not upon, it's on, Stratford-on-Avon, England, he went to London, where his reputation as a dramatist and a poet was established. His sonnets, 154 in number, that is, he has written 154 sonnets, probably written between 1593 and 1598. So these are not the, the final dates, but according to most of the scholars, though most probably these sonnets were composed in between 1593 to 1598. So they were published in 1602. Now the above sonnet is sonnet number 116, in which he depicts, or which is a depiction of true love. His voluminous work includes 36 plays and 2 narrative poems. Recently, it has been discovered that he also composed 2 narrative poems, apart from, composing sonnets, for which he is widely praised. Um, well, another word that you can add to your difficult words, which they have listed in the beginning, is bark. B-A-R-K, bark. देखिए bark के बहुत से माने होते हैं. Bark as a noun means the skin of the tree. लेकिन यहाँ पे bark से मतलब है boat. And you also say that the dog barks. So, in the sonnet, we will focus on words, phrases, and images which suggest that love is permanent, or the theme of the poem. Then, one important feature of this sonnet is that the poet has used too many negatives to make his statements. This is because he wants to negate, he wants to deny certain popular misunderstandings and false or incorrect opinions about love. We'll also be focusing on some particular lines. And the poet presents love as the agent or the doer of actions in the poem. We'll try to find out the reasons for this.
he has not involved a human agent. Instead, the love is supposed to be the doer. Well, this is to suggest that love is something powerful, something that is vitalistic. Love is not a dead thing, is not a dead notion or a mere concept or a mere idea. It's a very much a part of the living beings. So, in this sense, it in itself is a living thing, which suggests its force, you know, and its relevance. Then we will be analyzing certain phrases and try to understand their meanings. Now, you see, Shakespeare has composed 154 sonnets, and experts believe that first 126 sonnets are addressed to one of Shakespeare's friend, and the other 28 are expressed to a dark lady. But let me tell you also, this theory is known as WH theory. This theory has been rejected. Shakespeare's friend, dark lady, and various people have come up with various uh, explanations, because um, Shakespeare has uh, used WH. So people have tried to interpret it in different ways. Anyway, अब ये थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई, तो सोनेट्स का मीनिंग जो है वो आप ध्यान रखें कि दैट इज यूनिवर्सल. First of all great poetry and all great literature is universal. अब यूनिवर्सल के क्या माने होते हैं? Universal means that which is meaningful, relevant at all times and at all places. Otherwise, आप देखें कि शेक्सपियर की डेट्स हमने देखी 1564 to 1616, यानी आज से 500-600 साल पहले जो चीज़ लिखी गई और हम इंडियंस हैं वो इंग्लैंड में लिखी गई. तो अब सवाल ये है कि हम उस पर क्यों इंटरेस्टेड हैं, हमारे लिए वो किस तरह से रेलेवेंट होगी. तो लिटरेचर की यही ग्रेटनेस होती है कि वो हर जगह रेलेवेंट होता है और हर टाइम में रेलेवेंट होता है. द ऑथर और द पोएट ट्रांसेंड्स द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस and transforms his feelings into symbols of universal significance. क्या मतलब हुआ इसका? Transcend, इस वर्ड को समझ लीजिए. Trans is a prefix. इसके दो माने होते हैं प्रीफिक्स के, एक तो टू अ चेंज्ड स्टेट और अक्रॉस. तो टू अ चेंज स्टेट जैसे आप कहते हैं ट्रांसफॉर्म, यानी फॉर्म चेंज कर देना. तो अब जब ट्रांस में हम सेंड मिला देते हैं तो यानी टू सेंड अक्रॉस प्लेसेस एंड टाइम, तो वो यूनिवर्सल हो जाता है. सिंबल्स ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस. सिंबल्स भी कई तरह के होते हैं, प्राइवेट है, पर्सनल है. यूनिवर्सल सिंबल्स को जब पोएट यूज करता है, फॉर एग्जांपल रिवर इज द सिंबल ऑफ लाइफ. नाउ दिस इज अ लव पोएम फॉर एग्जांपल. मैं आपको इसी से एग्जांपल दूंगा व्हेन वी टेक अप द टेक्स्ट. But here the poet is talking about the philosophy of love, the concept of genuine love. He's not referring to two particular lovers or their feelings, no. And so the idea or the concept or the feeling of love is a universal thing which all of us experience in different ways at different places. But the images used in the sonnet, like the ever fixed mark, the North Star,
And some other images, when we shall see, suggest that it has certain qualities which are present at all places and at all times. That is why the sonnet is great. और किसी याद रखिए किसी भी टच स्टोन जिसे बोलते हैं, कसौटी जिसे कहते हैं, अगर आप परखना चाहते हैं कि कोई भी लिटरेरी पीस हाई क्वालिटी का है या नहीं है, तो उसमें दो तीन चीज़ें होनी चाहिए, मस्ट हैं। एक तो ये कि वो यूनिवर्सल होना चाहिए, दूसरे उसमें इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो कैरेक्टर्स हैं वो उन्हीं तक लिमिटेड हो फीलिंग्स, या पोइट की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो हमें किसी की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। हमें तो ये देखना है कि वो हमारे लिए किस तरह यूनिवर्सल, किस तरह मीनिंगफुल है। सो इफ दैट appeal, if that universal appeal is there in a work of art, then it's great. And of course, Shakespeare is great. He has created universal feelings in his poetry, and it appeals to everyone, and in a very easy and fluent manner. हालांकि शेक्सपियर का ये जो सोनेट है, दिस पर्टिकुलर सोनेट, यू फाइंड मेटाफोरिक लॉजिक इन द सोनेट, and it may even be read as a precursor to the metaphysical poetry. अब ये मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, इसके बारे में तो ज़्यादा डिस्कस करने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक स्कूल ऑफ पोइट था जो डन मार्वल वगैरह का था, जो जिन्होंने लॉजिक इस्तेमाल किया अपनी फीलिंग को डिफाइन करने के लिए। वो बाय द वे, एज आई हैव टोल्ड यू, इलेक्टिव इंग्लिश स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे चैनल पे जो 5-6 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लास्ट में देख लीजिएगा जाके, इलेक्टिव इंग्लिश, 12th इलेक्टिव इंग्लिश में, इंग्लिश पोइट्री पे हैं वो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पोइट्री इन इंग्लिश अप टू द मॉडर्न टाइम। तो उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, उससे आपको पूरी हिस्ट्री का आइडिया हो जाएगा और सारे ट्रेंड्स का आइडिया हो जाएगा, सब पता चल जाएगा आपको। लेकिन चूंकि अभी हमें अपना कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए वो सब चीज़ें रिपीट करने का, अब मतलब कि उसको नए सिरे से करने का अभी टाइम नहीं है। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ उस चीज़ पे जो अभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल है। सो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़, एंड इफ़ यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, उस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आए, आप कुछ और समझना चाहें, या किसी भी मैटर से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहें, तो आप you can ask it on your group, WhatsApp group, and I'll also add my WhatsApp number in the description for the benefit of the YouTube viewers, so that if they want to kind of ask anything, they can WhatsApp me their messages. Better it is if they do so in the form of voice notes, and I'll reply to that. Try my best to reply to that. So please listen to those videos, watch those videos. Okay, तो अब इसमें metaphoric logic है, but you see, it's Elizabethan literature, it's Shakespeare, तो इसमें lyricism है, म्यूजिकल क्वालिटी, जैसे कि हमने पिछली पोएम में देखा था, लिरिसिज्म भी है, मीटर भी है, रिद्म है, राइम है, एंड you know all sonnets, or let's say a group of sonnets which were written or composed by Shakespeare and his contemporaries, and later the romantic poets, these sonnets have lyrical qualities. लिरिक, जैसा मैंने आपको एक सवाल के जवाब में पहले भी बताया था, किसी ने ग्रुप पे पूछा था, लिरिक इज अ टेक्निकल टर्म. Now lyric may have different form. A song is also a lyric. A poem may be a lyric. A sonnet may have lyrical qualities. And I've suggested a book for you too, A Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams. This book is available in our school library, but for the time being,
we are having online teaching, so you can try to buy it. It's a very useful book since you are elective English students. So obviously that book is going to help you later on as well for a long, long time, you know. In fact, every student of literature must have that book so that any time he would be able to look up any form in the book. So it has lyrical quality. अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जब आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखेंगे तो उसमें ये सब लिखना पड़ेगा. When you write a theme, you need not write all these things. थीम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये कि आपको ओनली सब्जेक्ट मैटर और थीम पे फोकस करना है, जो मैंने आपको डिक्टेट किया है. अब आप इसमें पोएम से डिटेल और ले सकते हैं. बट क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने का तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा पोएट के बारे में भी लिखें, पोएम के फीचर्स के बारे में लिखें, व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस आर यूज्ड, हाउ theme is expressed, whether there are figures of speech also, metaphors, similes, especially analyze the rhythm, image, rhyme, and also talk about the form, if it's a sonnet or a ballad or a lyric, and point out in how effective a manner the poet or the writer has been able to present his feelings. And towards the end, you can conclude by saying that it's a good poem or a great poem or a very great poem, and so on. Okay, now you see, let's talk a bit about sonnet. This poem, you know, is called a Shakespearean sonnet. Uh, just a minute. You know, sonnet, there are so many variations in the structure of the sonnet in English. एक ज़माना था शेक्सपियर के ही टाइम में, 16th सेंचुरी में, जब लगभग हर पोएट जो था वो सोनेट लिख रहा था. तो एक पोएट था डन, उसने लिखा कि वन हु राइट्स वन सोनेट इज फूल एंड वन हु राइट्स टू इज मैड. तो जिस तरह से उर्दू में गज़ल है, हर कोई गज़ल लिखने की कोशिश करता है. सबसे पहले नज़्म और मरसिया और रुबाई और कसीदा, वो सब तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आदमी जब पोइट्री लिखता है कोशिश ये करता है कि गज़ल कहे. इन इंग्लिश व्हेन इट कम्स टू राइटिंग पोइट्री, दे यूज्ड टू ट्राई सोनेट फर्स्ट. नाउ ऑफ कोर्स इन मॉडर्न टाइम्स थिंग्स हैव चेंज्ड. अच्छा, अब सोनेट में वेरिएशंस भी बहुत सारे आ गए हैं. Basically, sonnets are of two types. One is English sonnet और Shakespearean sonnet. क्योंकि शेक्सपियर ने इस sonnet इस फॉर्म को यूज किया, पॉपुलराइज किया, एस्टैब्लिश किया, so it came to be known as Shakespearean sonnet. ये पैटर्न जो है, हालांकि ये इंग्लिश sonnet भी इसका नाम है. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इट्स अ 14 लाइन पोएम, और उस 14 लाइन में शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरेन्स होती हैं. क्वार्टरेन इज अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, और उसमें राइम स्कीम जो होती है वो यूजुअली ए बी सी डी ई एफ, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ ईच स्टैंजा राइम्स विद द थर्ड, सेकेंड विद द फोर्थ. अब ये भी हो सकता है कि पहले स्टैंजा का राइम जो है वही राइम दूसरे स्टैंजा में भी चले, तीसरे में भी चले. ये भी हो सकता है कि पहले स्टैंजा का राइम, पहली क्वार्टरेन का राइम कुछ और हो, सेकंड का कुछ और थर्ड का कुछ और. अच्छा, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज that it has a dramatic quality. Remember that Shakespeare was basically a dramatist, a playwright. तो इसमें क्या होता है कि in the first 12 lines, in the first 3 quatrains,
The poet presents an idea and keeps on developing it. Then, in the last two lines, suddenly the conclusion comes. इस सोनेट में कंक्लूजन स्टेप बाय स्टेप नहीं आता, एकदम से लास्ट टू लाइंस में कंक्लूजन आ जाता है. वो द लास्ट टू लाइंस ऑफ द सोनेट्स आर कॉल्ड कपलेट. कपल से कपलेट, where both the lines rhyme with each other. So this is the quality of the Shakespearean sonnet or English sonnet. Now there is another kind of sonnet which is known after the great Italian poet Petrarch. So this sonnet is called Petrarchan sonnet, Petrarchan, Petrarchan sonnet or Italian sonnet. In our course, we have another sonnet which is by Wordsworth, and that is a Petrarchan sonnet. ब्रीफली मैं उसके बारे में अभी बता दे रहा हूँ, डिटेल में मैं उस वक्त डिस्कस करूंगा जब मैं वो सोनेट आपके साथ करूंगा. सो अनलाइक शेक्सपियरियन सोनेट, a Petrarchan sonnet is divided into two units. First, a stanza of 8 lines. ये 8 लाइन का स्टैंजा होता है और इसमें एक ही लाइन चल सकता है फ्रॉम फर्स्ट टू, यूजुअली फर्स्ट line rhymes with the third, second with the fourth, and then you may say first line rhymes with third, third line rhymes with fifth, fifth line rhymes with seventh. ऐसे भी हो सकता है. इस तरह भी हो सकता है कि second line rhymes with the fourth, fourth line rhymes with sixth, and sixth line rhymes with eighth. तो पैटर्न जो बन जाता है वो बन जाता है ए बी ए बी ए बी ए बी या ए बी सी डी. यानी एक साउंड के लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे साउंड के लिए बी इस्तेमाल करते हैं. कभी कभी थोड़ा सा वेरिएशन भी आ जाता है, जैसे ए बी, फर्स्ट लाइन एक सी हो गई, सेकंड और थर्ड राइम कर रही हैं, या ए बी सी और ए बी सी और डी डी. अब ये पैटर्न बदल गया, यानी आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो फोर्थ के साथ राइम करेगी. ए बी सी हो गया, फिर ए बी सी हो गया. तो ये क्लियर है कि फर्स्ट और फोर्थ राइम कर रही हैं, सेकंड और फिफ्थ और थर्ड और सिक्स्थ. तो ये सब वेरिएशंस हैं, ये हो जाते हैं, इतनी कोई टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है. यूजुअली द लास्ट टू लाइंस ऑफ दिस 8 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड a couplet, that is in the form of a couplet. The last two lines rhyme. अच्छा, अब इसको ये ध्यान रखिए कि ये जो 8 लाइन का स्टैंजा है इसको कहते हैं ऑक्टेव, OCTAVE, ऑक्टेव या ऑक्टेट, OCTAT, ऑक्टेट, दोनों वर्ड चलते हैं. अब जो दूसरा पार्ट होता है इसका, उसको कहते हैं सेस्टेट, SESTET, सेस्टेट या सेक्सटेट, SEXTET, which means six. सेस्टेट और सेक्सटेट दोनों स्पेलिंग्स चलती हैं. दिस इज द स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ 6 लाइन्स. अब इसमें भी राइम स्कीम में वेरिएशंस हो सकते हैं, ABC, CDC, यानी थर्ड लाइन फोर्थ लाइन राइम करे, थर्ड फोर्थ सिक्स्थ राइम कर रही है. तो बहरहाल राइम किसी न किसी फॉर्म में होता है. तो इस पेट्रार्कन सोनेट की खूबी ये होती है, अनलाइक शेक्सपियरियन सोनेट, देखिए फर्स्ट 8 लाइन्स स्पेशली मेंशन अ प्रॉब्लम, और इन द फर्स्ट 8 लाइन्स द पोएट मेक्स अ स्टेटमेंट, वो एक बात कहता है, बताता है. अब जो कंक्लूजन आता है दैट कम्स slowly in the last 6 lines in a step by step manner.
जबकि हमने देखा कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है कि 3 क्वार्टरेंस में 4 लाइन के 3 स्टैंजास में पोएट जो है वो कोई प्रॉब्लम रखे या स्टेटमेंट रख दे या कुछ भी करे, डिस्क्रिप्शन दे, फिर सडनली लास्ट 2 लाइन्स में कंक्लूजन दे दे। ऐसा नहीं होता पेट्रार्कन सोनेट में या इटालियन सोनेट में। इसमें फर्स्ट 8 लाइन में कोई स्टेटमेंट या प्रॉब्लम होती है और फिर जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, एंड इन द नेक्स्ट 6 लाइन्स which is called sestet or sextet, you know, in the next 6 lines, in the sestet, the poet comes to a conclusion in a step by step manner. So, these are two major divisions of a sonnet. अब और वेरिएशंस भी आपको मिल जाएंगे आप अगर स्टडी करेंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कोशिश की है कि ना तो उन्होंने क्वार्ट्रेन को फॉलो किया है, ना ऑक्टेव और सेस्टेट को फॉलो किया है, बस ये कि 14 लाइन की एक पोएम लिख दी तो वो सोनेट होगी। फिर कुछ लोगों ने 15 और 16 लाइन की भी सोनेट्स लिखे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड, जो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ सोनेट इन इंग्लिश जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन 2 टाइप्स जो हमने अभी डिस्कस किए। नंबर 1 इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट, नंबर 2 Petrarchan or Italian sonnet. So I hope this concept of sonnet is clear to you now. Our poem, I have introduced the poem to you. It's a sonnet. In the first 12 lines, the poet keeps on defining love. He tells us about different characteristics of genuine love. And in the last 2 lines, he throws a challenge and says something like, if anyone can prove that I'm wrong, then I would stop writing poetry. So this we shall see when we take up the text. But this background was necessary. देखिए, इस बैकग्राउंड के बगैर आपको पोएम ठीक से ना तो समझ में आ सकती है और ना ही आपको फिर एग्जाम में क्वेश्चंस के जवाब देना जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। And if you follow this video very carefully and also attend the class and try to understand the explanation, इतना अगर आपने कर लिया तो फिर आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी पे जो आपके नोट्स होंगे, that will be enough for both the final exams as well as the sessionals. So to sum up, in today's session we discussed the theme of the Shakespeare, the poem, the second poem called "Let Me Not to the Marriage of True Minds." We also discussed some of the difficult words, and we discussed the introductory aspects of the poem, and we talked about the 2 kinds of sonnets which are established in English poetry. We also talked about a bit about about Shakespeare and how to approach Shakespeare at this stage. So now my request is, it's by my watch, it's about to be 4 o'clock. अब हमारी जो क्लास होनी है वो होनी है कल 1 बजे. This means about 21 hours are still left और इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा. I'll request all of you to go through it, understand it properly. कुछ समझ में ना आए तो you can immediately drop a question on the group, या फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो पूछ लें. So tomorrow, hope in all likelihood, if of course everything goes well, if God has willed it, अगर अल्लाह का हुक्म है तो इंशाल्लाह ताला हम कल 1 बजे अपनी क्लास करेंगे और उसमें हम ये सोनेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि मंडे में फिर हम अपनी 3rd पोएम ले सकें. So please study it,
एंड रिस्पॉन्ड टू मी. आप ग्रुप पे रिस्पॉन्ड दीजिए कि आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है, समझ में आया है, नहीं आया. ये I'll wait for your responses on the group, and I hope you would not disappoint me. I would also love to have reactions from the viewers on YouTube. They can send me questions on my personal chat on WhatsApp, and hopefully I'd, you know, try to answer their questions, or if necessary, I'll, based on those questions, I would prepare another video and upload it accordingly. So this is nearly all of for you see this session of our what we call podcast. You know, this particular video. So hope to getting responses from you, and I also very much expect that we should be able to meet for our class tomorrow at 1 p.m. So with this, um, until we meet again, take care and goodbye. Thank you very much.